came with one of the 5-mark question for the revision for this coming session. So the first question is that out of the formic acid and acetic acid, which one will give the HVZ reaction? HVZ means here we are talking about the Hell-Volhard-Zelinsky reaction, and this reaction is given by the carboxylic acids, and the carboxylic acids which are having the alpha hydrogens means the carbon adjacent to carboxylic group is known as alpha carbon, and the hydrogen present on that alpha carbon is known as alpha hydrogen. So out of formic and acidic, formic acid means we have to be write like this, and acidic acid is this one. So it is very clear that Hell-Volhard-Zelinsky reaction is given by the carboxylic acid which is having alpha hydrogen in it. So here this acid is not having a alpha carbon, and so the alpha hydrogen is absent here. So this acidic acid will give the Hell-Volhard-Zelinsky reaction. So first let's write the full form of this HVZ, that is Hell-Volhard-Zelinsky reaction, and this reaction is given by, or it is a chemical property of carboxylic acids, which is a subtopic from the unit, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid, and this is the reaction which is given by carboxylic acid, and this is the chemical reaction by the carboxylic acid. So, and in this reaction, in the presence of small amount of red phosphorus, we can attach or we can substitute a halo, either chlorine or bromine atom at the alpha carbon. So the substitution or introduction of halo means especially chlorine and bromine at the alpha carbon in the presence of small high phosphorus is known as HVZ, Hell-Volhard-Zelinsky reaction, and so this is the acid which is having alpha hydrogen here and alpha carbon here. So this will give this one. It says out of formic acid and acetic acid which one will give this. So first, so हमने यहाँ पे लिख दिया that acetic acid will give HVZ reaction, and why? Because it says give a suitable reason, because acetic acid contain alpha hydrogen, and this reaction is given by only those acids which are having the alpha hydrogen in it. So reason भी दे दिया है, and write the chemical reaction involved. So we have to be write the chemical reaction here. So that is, we will take the acetic acid, and either we will take Cl2 or Br2 in the presence of red phosphorus. This halo group will go to this alpha carbon and we will get COOH and CH, and either we will get a Cl or Br. So the introduction of halo, especially chloro or bromo halogen atom at the alpha carbon
in the presence of red phosphorus is known as HVZ, and this will given by the acetic acid. So it says first of all कौन सा देगा, we will get half marks for this, हमने यहाँ बता दिया ये देगा, and why reason is there, half marks for this, and write the chemical reaction, we will get either half or 1 mark. तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको अटेम्प्ट करेंगे. Now the second question is that alcohols are acidic, but they are weaker acids than water. First of all, we are telling the organic compound acidic if it is giving hydrogen easily in its aqueous solution. जब भी कोई यहाँ पे अल्कोहल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, it is giving the hydrogen, means we are talking about the chapter alcohol, phenol and ethers, and here in this question they took the topic alcohol. Alcohol are acidic in nature because so they are alcohol का जो journal structure है, this is the one. जो chemical properties है alcohol की, either due to the cleavage of ROH or the second one is due to the cleavage of OH. The acidic property is due to the cleavage of OH bond because H leave करना है. So here the alcohol are acidic due to the cleavage of OH. Cleavage किसका होगा यहाँ पे? Cleavage of OH bond, and this is the chemical property of alcohol. Alcohol are acidic in nature because alcohol can give the hydrogen easily in its aqueous solution, or proton को easily दे देगा, but it is weaker than water. Why it is weaker than water? In water में what we are having, in water we are having the structure like this, और जो water है, water की जो structure है that is एक vent type है. यहाँ पे दोनों ही साइड पे हाइड्रोजन अवेलेबल है which is the smallest atom, and ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से पोलैरिटी बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी. दूसरी साइड भी हाइड्रोजन है, आइदर वी कैन मेक पोलैरिटी हियर, और यहाँ किसी में भी बना सकते हैं. जितना जल्दी पोलैरिटी डेवलप होगी उतना जल्दी हाइड्रोजन या प्रोटॉन वहां से लीव करेगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा. But in case of alcohol, due to the presence of this alkyl group present है, due to the presence of alkyl group, ये जो presence है यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा बिकॉज ये भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करेंगे, एंड this proton will not easily leave the oxygen. That is why these alcohols are less acidic as compared to the water. Now ये तो जर्नल जो स्टेटमेंट दी थी उसे मैंने एक्सप्लेन किया कि why alcohols are less acidic as compared to water. But the question है arrange. It is just a statement. वो statement दी है, that question is not from that. Arrange various isomer of butanol, means butanol जो कि हमारा एलिफेटिक एक अल्कोहल है, और उसमें हमने उसके जितने भी आइसोमर्स बनाने हैं उसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर. मीन्स वी हैव टू फर्स्ट राइट द लीस्ट एसिडिक, then more and finally the highest acidic. So let first write butanol and the various isomers of the butanol, because हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा. नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन, एंड इफ यू टुक द स्क्रीनशॉट good, otherwise you can take the screenshot. I am going to erase this one and we have to do the second part, B part हम करेंगे. So it says कि जो हमारा ब्यूटेनॉल है उसके आइसोमर्स को अरेंज करना है. ब्यूटेनॉल, so butanol means all together we are having the 4 carbons and the rest straight chain
4 कार्बन इस तरह से है, ये ब्यूटेनॉल है, इसके आइसोमर्स लिखने हैं तो लेट राइट द आइसोमर दैट इज CH3 CH2 COH एंड H एंड CH3। तो ये हमारा 1 ब्यूटेनॉल है और यू कैन राइट ब्यूटेन 1 ऑल एंड दिस इज butane 2 all, and we can write the one more isomer here that is CH3 COH and CH2 yes 3 and CH3. So what is that? This is 2 methyl propane 2 all, एक ही आइसोमर बन गया। और वी कैन राइट वन मोर, एक हम और लिख सकते हैं दैट इज CH3 CH2, this is CH3 and we will have this एक इस तरह से हम लिखेंगे इसको दैट इज C and CH2OH 1 2 3। तो बेटर वी शुड टेक दिस वन, अल्कोहल वही रहने देते हैं एंड वी कैन राइट दिस मिथाइल ग्रुप हियर। सो 1 2 3, तो या इसका क्या हो गया, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। Right now we are having 4 isomer of butanol के 4 isomer है and as the branch will increase means जितना ज़्यादा primary is more acidic because उसमें bulky group present नहीं है, secondary is less acidic, then tertiary is least acidic। तो जैसे जैसे alkyl group ऐसे कार्बन जिस कार्बन के पास OH है उसमें बढ़ते जाएंगे उतना OH क्लीवेज या पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दिस टर्शरी इज लीस्ट एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल, because in primary alcohol the carbon which is having the OH group will have the 2 hydrogen and that is not giving any or we can say that is not that much bulky to provide the electron to the oxygen. So primary are more acidic. So let's see means this one यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो ये वाला जो है सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एंड देन वी विल हैव दिस वन, यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल आ गया है, ये भी इस कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आ सकता है और ये वाला कार्बन तो बिल्कुल ही टर्शरी है, इसके पास बहुत सारे बल्की ग्रुप है तो ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें इस कार्बन इसमें भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है बट अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कितने ज्यादा जो कार्बन है उनके पास कोई इतना मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सो वी कैन सी हमारा ये वाला जो आइसोमर है 1 ब्यूटेनॉल वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इजीली लीव करेगा एंड देन दिस वन इज लीस्ट एसिडिक 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 ऑल सबसे जो लीस्ट एसिडिक होगा एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे इन दोनों में हमने देखना है ये ब्यूटेन 2 ऑल है, दोनों साइड पे यहाँ पे बल्कि ग्रुप अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं। सो मीन्स ये सबसे लीस्ट एसिडिक है, देन दिस वन एंड देन वी आर हैविंग दिस वन। सो अगर हम एसिडिक कैरेक्टर लिख रहे हैं दिस इज, अगर हम इनको नंबरिंग कर दें 1 and 2 3
हमने ये 4 आइसोमर को नंबरिंग कर दिया है एंड लेट्स सी नाउ वी हैव टू बी अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर in the arrange in the increasing order of their acidic nature. So first सबसे ज्यादा है and then जो 3 नंबर पे है वो तो लीस्ट है, then now 2 and 4, अगर हम 2 and 4 की बात करें तो दोनों साइड बल्कि है, मीन्स 2 यहाँ पे आ जाएगा and then we will have this 4. सो दिस इज दी जो मैंने नंबरिंग डाली है, हम यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं कि जो थर्ड नंबर है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 ऑल लीस्ट एसिडिक, देन सेकंड नंबर ब्यूटेन 2 ऑल एंड देन वी आर हैविंग 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल and the highest acidic is 1 butanol. So here we done with the answers to the B part. Now the last question of this 5 mark is that an organic compound A, which is a Grignard reagent, is used to obtain 2-methyl butane 2-ol on reaction with carbonyl compound B. Identify A and B and write the equation for the reaction between A and B. So question में क्या लिखा है, an organic compound A which is a Grignard reagent, means A क्या है, A is a Grignard reagent और Grignard reagent का जो फॉर्मूला होता है that is RMgX, which is used to obtain 2-methyl butane 2-ol. क्या मिलेगा हमें, क्या लेके जाना है, 2-methyl butane means 1 2 3 4 एंड 2 पे O लगा हुआ है एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है. वी आर सपोज टू गेट दिस 2-methyl butane 2-ol. तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा when it will react with the, किसके साथ react कर रहा है, on reaction with the carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड B के साथ रिएक्ट करेगा और जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसमें ये तो मैंडेटरी है कि RCO तो होगा, अब वो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और कीटोन हो सकता है. सो अगर हम ये वाला कंपाउंड ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन मींस ये कार्बोनिल ग्रुप से आया होगा और उसकी दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो डेड श्योर है कि ये एक कीटोन है. जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो कीटोन है. अब हमने आइडेंटिफाई करना है ए ये है और बी ये है और वी आर गेटिंग दिस वन, हमें ये मिल रहा है. तो फॉर डेड श्योर की जो हमारा कीटोन है दैट इज CH3 CH2 CO CH3. तो मीन्स हमारे पास जो कीटोन है दैट इज 2 ब्यूटेनॉल, ये बी है वो जो आइडेंटिफाई हो गया. और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो मीन्स ये यहाँ पे जो साइड चेन लगी है वो यहाँ से लगी होगी, तो मीन्स हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दैट इज जो A है दैट इज क्या है CH3 और Mg. अब यहाँ पे जो X है आप उसे क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमाइन भी ले सकते हैं और सिंपल हम हेलो भी छोड़ सकते हैं, मीन्स मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड. और अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया क्लोरीन या ब्रोमाइन तो B क्या है, A क्या है हमारा दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम. यहाँ पे हमने क्लोराइड ले लिया है, अदरवाइज हम हैलाइड भी लिख सकते हैं अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया होता. अगर हम ब्रोमाइड लेते तो ब्रोमाइड भी लिख सकते थे. नाउ इट सेज राइट आइडेंटिफाई A and B and write the equation. सो हमने इक्वेशन लिखनी है, लेट राइट द इक्वेशन हियर. अब हम इक्वेशन कैसे लिख लेंगे इसकी, प्लस CH3 Mg Cl
पे, ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये व्हाट वी कैन से यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा और ये अपनी तरफ ले आएगा, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दिस वन विल टेक यहाँ पे नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट दैट इज CH3, CH2 and CO, Mg, Cl, and here we are getting Cl and CH3. ये हमें एक एडप्ट मिलेगा, ये एडप्ट मिल गया है एक्सक्यूज मी, एंड ऑन दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम इसका करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर दैट इज, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सो वी आर गेटिंग CH3, CH2, COH, CH3 and CH3, along with that we will get Mg, OH and Cl, जो भी हम हाईलाइट लेंगे. So this is the way we can write the chemical reaction for the C part of the 5 marks question. So here this is the 5 mark question. In parts we are having A part, and I just done the answer for A part, then B and C. So you can take a screenshot, and we will meet in the next video with the more sample